Hello and welcome to Quick Bite is Always a Delight with me Shipra Khanna. आज Quick Bite is Always a Delight में मैं बना रही हूँ penne pasta in cheese sauce and this recipe is on demand, purely on demand, and I'm making it really easy for you and for all those people who do not enjoy cooking a lot. ये बहुत quick है, easy है and it's yummy too. तो सबसे पहले हम पैन के अंदर बटर को गरम करेंगे. बटर ताकि जले नहीं, मैं उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ. दिस प्रिवेंट्स द बटर फ्रॉम बर्निंग. नाउ टू दिस आई एम गोइंग टू ऐड चॉप्ड गार्लिक. इसे हमें सौटे करना है और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स, रोजमेरी एंड ऑरिगानो. I like to make my pasta the way I like it and that's the recipe I'm sharing with you. ये फ्राई हो चुके हैं. अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये पेने पास्ता जो ऑलरेडी बॉइल्ड है. इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से. I'm going to season it with salt, a little bit of pepper. You know what's the best part of cooking, which I really enjoy, is that there are no rules. You can make anything the way you like. It's as simple as that. अब ये सारे फ्लेवर्स कंबाइन हो चुके हैं. इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डालूंगी हेवी क्रीम, a little more. इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे. You can adjust consistency according to taste. और अब मैं इसमें डालूंगी mozzarella cheese. Yummy. After all, it's a cheese sauce. It should be loaded with cheese. इटालियन खाना है, बिना चीज के तो मजा ही नहीं आता. तो चलिए, without much ado, let's plate it. Cheesy cheese pasta. Wow, sounds cheesy, right? But well, without cheese, there's no pasta. और अब हम इसको गार्निश करते हैं फ्रेश basil leaves के साथ. Simple and as classic as can be. Your penne pasta with cheesy sauce is ready.